Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are doing my birthday look. So let's start the video. Skin prep के लिए मैं Nivea moisturizer यूज़ कर रही हूँ. बहुत जल्दी सा क्विक नो मेकअप लुक करने वाली हूँ मैं मेरे बर्थडे पर. फर्स्ट हम लोग ये यूज़ करेंगे कंसीलर पैलेट टू हाइड माई डार्क सर्कल्स. हल्के से डार्क सर्कल्स है, इसको हाइड कर देंगे हम लोग जल्दी से. और ये मैं मेरा बर्थडे लुक मेरे गो टू मेकअप प्रोडक्ट से कर रही हूँ. इसको फिंगर से ब्लेंड करते हैं. उसके बाद यही पैलेट में से येलो कंसीलर यूज़ करेंगे टू ब्राइट अंडर आइज. हम लोग जहाँ जहाँ फेस ब्राइट करने का है वहाँ पर हम लोग येलो कंसीलर यूज़ कर सकते हैं. मुझे टी जोन ब्राइट करने का है. मेरा फेस मॉइस्चराइज है तो इसलिए ईज़िली फिंगर से ब्लेंड हो रहा है, वरना मोस्टली आई यूज़ ब्लेंडर. अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये पाउडर पफ blend these creases. क्रीजेस ब्लेंड होने के बाद मैं डायरेक्ट पाउडर पर डायरेक्ट पाउडर लगा रही हूँ टू लॉक द क्रीजेस. क्रीजेस ब्लेंड होने के बाद नाउ आई एम यूजिंग एल्फ ब्लश. इसमें बहुत ग्लिटर है सो वी डोंट नीड ग्लिटर. चिक पे लगाते हैं नोज पर एंड हियर. And I am using MAC Studio. And I am using this Benefit Goof Proof Brow Pencil. Now I am using NYX Tinted Brow Mascara. Okay, no worries.
इसको हम लोग ड्राई होने देते हैं ये मस्कारा को, उसके बाद इजली रिमूव हो जाएगा। सो नो वरीज। मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, हल्का सा। And I am blending my concealer with fingers only. This palette is from Mars Cosmetics. इसको हम लोग ब्राउन शेड पेन करते हैं। ब्राउन शेड के बाद नाउ आई एम यूजिंग माई ब्रोकन हाइलाइटर। पता नहीं ये कैसे ब्रोक हो गया है, बट ये मेरा गो टू हाइलाइटर है। हम लोग इससे लुक कंप्लीट करेंगे। आई थिंक ये मस्कारा ड्राई हो गया है। जिसको ये टेक्निक पता नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल मस्कारा यहाँ या अंडर आइज पर लग गया है, अभी फ़िलहाल तो मेरे आईब्रोज़ के नीचे लगा है, सो डोंट वरी। को पहले ड्राई होने दें, उसके बाद हम लोग को आईब्रो का यूज़ करना है। एंड यहाँ रुक कर दें। कंसीलर वगैरह वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको ड्राई होना दे, उसके बाद इससे ब्रश करें, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। I think I should add more glitter, तो आई एम यूजिंग दिस, कौन सा ब्रांड है भाई ये, स्विस ब्यूटी लिक्विड आई शैडो। हम लोग इसको हल्का सा पहले फिंगर पर लगाते हैं, फिंगर के टिप पर हल्का सा एक टू साइड अभी ब्लेंड करते हैं फिंगर पर। यस परफेक्ट, सी द डिफरेंस। अभी हम लोग यहाँ पर ब्लेंड करेंगे। टू गिव मोर ग्लिटरी लुक, इसलिए हम लोग वहाँ पर अंडर आई पर लग गए। नाउ इट्स टाइम टू कॉन्टूर माई नोज। और मैं कोई फाउंडेशन नहीं लगाई, सिर्फ कंसीलर दिस साइड और ब्लश खत्म। और मैंने कोई हाइलाइटर यूज़ नहीं किया है। चेक्स पर देख सकते हो, नोज पर देख सकते हो दैट ग्लो। मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो चेक इट आउट। नोज का हल्का सा शेप लेते हैं, not using too much powder, only हल्का सा। yes, इसको हल्का सेट होने देते हैं, उसके बाद हम लोग ब्लेंड कर देंगे। मस्कारा लगाएंगे।
वन मोर थिंग आई डू इज जो आईब्रो पेंसिल रहती है उससे मैं यहाँ आउटर कॉर्नर पर हल्का सा विंग लगाती हूँ। सी द डिफरेंस, यहाँ भी हम लोग लगा लेंगे। फिंगर से ब्लेंड कर देंगे। नाउ इट्स टाइम टू डू माई लिप्स। लिप्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, नेम नहीं है बट इसका मेरे को लिंक मिलते के साथ ही मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड ये मेरा सबसे फेवरेट है एंड दिस लिप पेंसिल ऑलवेज इन माई गो टू मेकअप पॉच। आप लोग समझ सकते हो मैं कितना यूज़ करती हूँ ये लिप पेंसिल। लगाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं बहुत सारा लिपस्टिक मिक्स करके एक लिपस्टिक का शेड बनाती हूँ। मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ ब्लू हेवन का लिप टिंट। इसका भी मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। या मैं ये यूज़ करती हूँ लिपस्टिक, या मैं रेड लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। तो आई विल यूज़ दिस रेड लिपस्टिक फ्रॉम स्विस ब्यूटी। इसका शेड है हॉट रेड। हम लोग ये रेड लिपस्टिक मिडल में लगाएंगे टू गिव ऑम्ब्रे शेड। हल्का से लगाने के बाद इसको ब्लेंड करेंगे। नाउ आई एम यूजिंग दिस माय ऑलवेज गो टू लिपस्टिक कलर बार। स्मैश बॉक्स का ओजी पिंक। ऊपर हल्का सा लिपस्टिक रिमूव कर लेती हूँ, उसके बाद देखना आप लोग। सो दिस इज़ माई कंप्लीट लुक। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आप लोग कैसा लगा है ये मेरा लुक। ये रहा क्लोजर। If you want more makeup videos, let me know in the comments. And यार ये कितनी औसम है यार। and I will be right back with another video. Bye.